Hello, Hello. sir, we are back. Yeah, just I'm saying there are only 28 students. So rest student they are not joined yet. Are you able to get the data? No, sir. Site is not working. Let me check one more time whether it is.
I think we should start. Okay. So, as the Survey of India website is having some issue, so we'll take another exercise and that we can see half part of query. We'll do some other time. So then we'll move to the map composition. So map composition exercise, what do you understand by map composition? So map composition is a step where you have created some database and now you want to showcase or you want to share with someone or you want to put into the final form in the project. So basically, so you are going to create a map. Now whatever we have is a individual layers. So let Uh, me Sir, could you please repeat the definition of map composition? We have the database and we create map, you said? yeah. So till now what we were doing, we were adding the layers. We are working on the layers. So we are working on the individual data or multiple data layers, but when you want to say this is final in the form of map. So so the data individual layer or multiple layers we are taking in the form of projects. For example, we created some database and you want to host this map on some website. Okay, so for that we need to go for the map composition, right? So for that map composition there is some process, so that process we are going to follow and create our map. Okay, so for example, oh, let's see, power is low. Okay, I need to connect with charger. Let me switch on the charger first. Just hold for a minute. Yeah. So you might be seeing here the these tiny maps on the Survey of India site. So you can see here this is little different than what you were doing in this QGIS window. Here we are doing something else, but these these are the database where these database were also prepared using some GIS software, right? So now it is in different form. All these maps, they are different, they are in the form of map now. So what is the difference here? Some useful information is added. Useful information for whom? To the users. Now Survey of India has created these maps and now we are the users, we want to see. So there in the layer, this is my India, say for example district boundaries, district map, district layer I am working. But here user should know what is the map, what this map is giving. This map is giving core services, national GCP library. So similarly each map is saying something. As a user I am getting some information, okay, in the form of some of the indicators, some text, some legend, some scale bar, something. So we are also going to create the our map, own map. So that is map composition. So
what are the elements of map composition? If you are going to create a map, so what elements minimum you required? You think from the user point of view. You are creating a map, and I am your user. I am using your map. So what are the elements of the map? What should it have? Anyone? First of all, the scale and Okay, the also the projection, okay, projection, very good. symbology, Symbology, or I will say legend. legion. Legion will be more appropriate. Then anything else it should have? Yes, sir. Sir, North. actually, the direction Direction. Okay, direction should be I'll there. I'll I'll write north arrow. Huh? Okay. And Anything else? then sir, grid line, latitude, longitude. Grid line. Okay, projection grid line. Subtitle, Grid. Mm, project Yes, title. Yes. very good. Title is very important. and Title. maybe sometimes subtitle also. Okay, title, subtitle. These are the basic features, sir. Labels. Levels So already sir written religion in the form of anything religion. else is And source, uh, what? source. Source. Okay, very good. Anything else as a user? What should I require? I mean, Okay, it should be aesthetically pleasing, and also information should be in a logical manner, like yes, yes, yes. gradation, color. So that user can easily use it. Okay. Yeah, yeah. So each this map element is important. Okay. So if we go one by one, if you we don't have scale on the map, so if I don't have scale on the map, I will not able to make anything out of it. For example, if I have scale, say scale in the any form, it can be you can put a scale bar, or you can put in a numeric, any way, but it should have like 1:2. Say you have written 1:50,000. So as a user, I will understand if I measure 1 centimeter on the ground, it will be 50 centimeter. Sorry, 1 centimeter on the map, it will be 50 centimeter on the ground. 1 kilometer on the map equal to 50 kilometer on the ground. So that way, scale for as a user will be helpful for me. If we don't put the scale, so user will not understand what is the distance in between two objects. Okay. Similarly, the projections. Last time also we were discussing this projection. If the projection parameters are not available, user will not understand where this map goes, where it sit on the Earth's surface. So that's why scale is very important. Projection is very important. Another point you told, legion. See, you have very good colorful map, excellent map, is looking very attractive, but you don't have the meaning for this color. So legend will tell user, okay, this blue color means water, this green color means something. Okay, so this brown color is road. So colors and symbols, they are very important so that user can understand what is there in the map. So this comes in the legend. Another important point you suggested is the direction. It's like north arrow. At least you should have one direction. And in general practice, I mean, it's not rule, but it's a general practice that most of the maps they are having with north arrow. Okay, this is very important. There should be direction. Then the grid lines. Okay, grid lines, graticules, so one and same. So they should be present in the map, maybe in the form of either lines or ticks, whatever fashion you want, but they are very important to give the geocoded information.
Similarly, the most important thing came in the last, that is the title, where I showed you Survey of India website. If there is no title on the map, so what you will do, you have to open every map and check inside what it is. That's why title is very important. If required, we can put subtitle also. And similarly, source from where the data you have in the map, maybe Survey of India, maybe National Bureau of Soil Survey Land Use Planning, maybe National Bureau of Plant Genetic Resources, maybe National Remote Sensing Agency, or it can be your own created also. So whatever source we can put. So these are the minimum, I think, things which we should have on our map. Okay, clear? So without map element, map is useless. This is as simple as that. No map will exist. No map will be meaningful if you don't have the basic elements. If the scale is missing, map will be useful. If north arrow is missing, map will be useful. So map will not be useful if these elements are not there on the map. Fine. So now let us have our own map composition. Okay, map composition is not that difficult. So what we will do, you use your data which you have downloaded. Now again I will say, data doesn't mean anything here for us. Okay, in your exercise, I think they have given some different data, but that doesn't matter for us. You can use any data, or you can use the data which is right now available in your QGIS, the same map, the same vector which you have some point layer. No, you can use that, no problem. You can use any vector, any raster. That doesn't matter. So you add that layer here. Whatever layer, add vector. So let me add one just layer for the demo. No vector is available. So the principles are the same for vector and raster maps, right? Yes, yes, yes. There no problem. You can add vector. You can add raster. I mean, you can even add photos also. Anything we can add. There is no restriction. Anyway, just for example, I am adding this. Acha, vector I have selected now. Yes. Here, Sir, one request, sir. huh? Sir, Yes. after we finish the map composition, sir, sir, Huh? can you talk how to read a topograph, sir? Exercise one. I think that one not yet covered, sir. How to How to read a topograph, sir? Exercise one, sir. topograph? Let me check which one you are saying. Getting started. Exercise Oh, one, sir. exercise one is not. Acha, this one using Google Earth. No, no, No. no, sir. Basic topograph, sir. Okay, but it's not in their list. Sir, the shared folder have no. I don't think it is in here, sir. Okay, we can cover it, but I just checking whether no, it's not in the list. Okay. Okay, if time permit, we can do that. No problem. Uh, Let me check any vector is there.
Okay, anyway, I'm just adding raster, which is available readily. Raster. You can work with vector raster, that doesn't matter. Mm, let me check, is there any data available here? We can take today's Yeah, vec- you can take today's exercise. I'm just seeing whether I have any data. and sometimes even what I have seen is an optional element in the map, an inside inset map kind of. So it's like if we want to show where a district in India lies in where a district map, but where it lies in India, for example, can we Yeah, call we it? can. Yeah, there are many. I mean, many options we can do. No problem. Oh, finally, I got some map. So, anyway, so this is some data, vector data. So similarly, you can use your today's data. That doesn't matter whether it's line, whether it's point, whether it's polygon. You can use all together single, no problem. So now what we are going to do, the map element which you have listed initially, that we are going to put here. Okay, for this particular map. So maybe before that you can go into its properties, और इसका जो आप सिंबोलॉजी दे दो, आपको जैसे चाहिए वैसे। पहले इसको आप ठीक करो कि आपको कैसे चाहिए सिंबोलॉजी, इधर ही दे के रखो, सो दैट देयर यू कैन डायरेक्टली यूज। ओके, सो अभी मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ सिंबोलॉजी। सो आप इसको अच्छे से कलर जो भी आपको चाहते हो आप इसको सिंबोलॉजी करो यहाँ आके। वंस यू हैव दिस सिंबोलॉजी, ओके, आपने सिंबोलॉजी किया इसको प्रॉपर, लुक एंड फील, लाइन कलर, पॉलीगॉन कलर, व्हाट योर मैप यू आर यूजिंग, इट्स पॉइंट, तो पॉइंट का कलर कैसा देना है, जो भी आपको करना है, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू पुट मैप इन द फाइनल शेप, वो यहाँ पे करो। आफ्टर दैट ये होने के बाद आपको इसको मैप कंपोजिशन में लेके जाना है। ठीक है, तो वो आप यहाँ से आराम से इसको लेके आए और यहाँ पे आपने
न्यू प्रिंट लेआउट में लेके गया, उसको नाम देना पड़ेगा समवेयर, जो भी आप नाम देना चाहते हैं नाम दे दो, इट विल कम हियर। ओके, सो दिस विल बी योर कैनवास। और यहाँ पे आने के बाद आपको देन यू हैव टू मेक अ मैप कंपोजिशन, इसका टाइटल रहेगा, नॉर्थ एरो रहेगा, सब कुछ यू हैव टू डू। ओके, क्लियर? Sir, your screen is got struck, sir. Now it is coming, sir. No, 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 no. Okay. So I'm not showing you the further steps in map composition. Okay, that you have to do. What most of the Okay, things okay, sir. you will get here only. See, for map composition, all required thing will be on this print layout they called, or you can call it map canvas or print canvas. So everything is here, but what you need to do, you have to use that option logically, like title font, north arrow, its placement, scale bar. So it's a professional map. Okay. सो यू स्टार्ट डूइंग वन बाय वन, थोड़ा हिकअप रहेगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा ये करेगा। सो यू फॉलो योर प्रोसीजर, मैनुअल प्रोसीजर, एंड स्टार्ट डूइंग इट। मजा आएगा, आप करते रहो एंड मेक अ ब्यूटीफुल मैप, वट एवर द पॉइंट लेयर यू हैव। अगर आप उसको छोटा करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास है, पॉइंट कुछ सिलेक्ट कर लिए, उसको एक्सपोर्ट किया, जो करना है करो, एज इट इज़ भी रख सकते हो, छोटा करके करोगे तो और थोड़ा सा लॉजिकल दिखेगा, इतने सारे पॉइंट्स करोगे तो थोड़ा क्लमजी हो जाएगा। ठीक है, सो यू स्टार्ट वर्किंग एंड विल डिस्कस इफ कुछ इश्यूज आते हैं, क्या आते हैं, तो वी कैन डिस्कस, नो प्रॉब्लम। Sir, this one is which exercise? 23, 23. Okay, sir. yes, map composition exercise number 23। Okay, sir.
So my idea here is I'm not expecting that you will make a professional map in first go. Not at all. Though I am saying you should make professional map, but I'm not expecting that. But my expectation is that on your print layout there are certain buttons and menus. Okay, so the expectation is that you should know where is the particular button for a particular element for a particular function. So I just, the purpose is I just want to explore and use all maximum, maybe all is not possible, but maximum menu buttons here, so that you will get yourself acquainted with the this map composition. Okay. So, Sir, yes, sir, this exercise 23 is talking about land degradation map, sir. Can you, sir, yes. please tell in which exercise that this land degradation map was discussed? As this is my first class. No, I don't think you guys have prepared land degradation map. Uh, so, Okay, so any can we take any layer, sir? yeah, I think you joined little late. What we discussed, you can use any layer, no restriction. See, map composition can be of any layer, and that land degradation is little spoon feeding to us because you should have radially layer so that you can use. But you can take any layer. Even morning's layer also you can take. There is no Okay, okay. restriction. Sir, just a while ago you were saying something regarding importance of map composition. May I please request to repeat the points? There is some bandwidth issue actually. Okay. So I was saying this map composition. See, for example, if I have prepared map, I have developed some vector layer or raster layer is my own. I know most of the things about the particular that data. So, and if I am using the same on my system, I need not require say any formal map composition. But if I am preparing a map and if I am sending to, for example, Shailendra Kumar, so he is my customer user, and if I send to him, he will be totally unaware, no, what it is. So he, first of all, he will look for the title. Oh, something has come. What it is? If title is missing, then there will be big confusion. If I put a title on my map, say the land use map of Delhi urban area. So this title will give him sufficient information. Okay, this is land use map of Delhi. So that is confirmed, and he need not to go inside. Similarly, other map elements like say legend, north arrow, it will give direction. For example, as a user, if you want to see like in Delhi, where is the Rajghat, or where is the Rajendra Nagar, or where is the some XYZ metro station, anything. So in which part of this area it is, east part, north part, south part. So direction or north arrow is also important. So all these minimum legends elements, they are very important. Without that, map will not become useful. Thank you, sir. So go one by one and enjoy this exercise. Less than science and more is the art. So while doing map composition, apart from these technical things, you should have some artistic uh, creation inside, so that your map will look more useful. So I'll mute for say a few minutes. You can continue. Sir, Yes. sir, as you mentioned, you can we can open any layer to draw map, but I don't know how to do it, and it's getting a little difficult for me to catch up everything because I don't know anything. No, morning layer you have.
Yes, sir, I have that. So you use same window. That's why I told you use morning's data, which is open in your QGIS. That as it is, you can use. If you don't want to take that all the points as it is, you can select a box and you can take few points out of it. That doesn't matter, Priya. The purpose is we should have some layer, any layer, even any vector can work. You can use that layer, no problem. Sir, that is not the fact. The fact is from where to begin and how to draw. It's not about pen and paper. It's about No, no, no. drawing computer. That that I want you guys should struggle. That is very uh, clear from my side. I want you guys to struggle. If you are not struggling, see this map composition exercise. It will not take more than 10 minutes. Okay. But If that's everything is set, so it will not take more than 10 minutes. And after doing completing the exercise, you will also do the same thing in 10 minutes. That's why I don't want to make any spoon feeding here. I know I just shown this blank canvas and I ran away, but I know putting the map there in the QGIS window here, you have little struggle, and it has to, until and unless आप ये स्ट्रगल नहीं करोगे तो वो फिर उसमें लर्निंग नहीं होगा हमारा। ठीक है, मुझे मुझे ये भी पता है यहाँ बैठ के कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार उधर का मैप इधर मेरा नहीं आ रहा है, वो कैसे आएगा। दैट स्ट्रगल आई पर्पसफुली वांट यू गाइस। आई नो वो ऑप्शन इधर ही इधर है वो मैप लाने का, बट वो स्ट्रगल करना पड़ेगा हमें। मैं आपको बताता हूँ एक मराठी में ना, मैं मराठी हूँ बाय द वे, इसलिए थोड़ा मुझे मराठी प्रोवर्ब थोड़े थोड़े पता है। तो मराठी में एक प्रोवर्ब है प्रिया, तो वो प्रोवर्ब ये है की टाकीचे घाव टोचल्याशिवाय देव पण येत नाही। आई डोंट नो, कोई मराठी होगा तो समझ गया होगा, तो नहीं भी है तो मैं इसका थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। मतलब आपने देखा होगा कोई भगवान का जो मूर्ति होता है ना, जो हाँ। पत्थर से बनता है, तो वो जिस पत्थर से बनता है, तो उस पत्थर को जो बनाने वाला होता है, उसको मूर्ति बनाने वाला, उसको कितनी बार उस पे प्रहार करता है, कितनी बार उसको उसको छोटे छोटे टुकड़े निकाल के मार मार के तब जाके वो मूर्ति बनती है। तो ये इतने सारे हार्ड हिटिंग्स जो वो बनाने वाला करता है, वो जो पत्थर होता है ना, वो सह लेता है, और उसके पास ही उसके बाद ही उसका भगवान बनता है। तो उतना तो सह करेगा तभी वो भगवान बनेगा। इसलिए आपको भी थोड़ा एफर्ट्स इसमें डालना है, बट नो वरीज। नहीं कोई होता है तो मैं तो इधर बैठा ही हूँ फुल टाइम, तो आई विल डेमोस्ट्रेट। हम कोई भी ऑप्शन को इसमें से छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन कोई भी ऑप्शंस बना बना के आपको देने वाले भी नहीं है। तो स्ट्रगल तो करना है, देन ओनली वी विल लर्न। ओके। ठीक है सर, लेकिन आप मेरे को थोड़ा सा ये बोल दीजिए कि मतलब जो आपका मतलब ये जो है ना स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा था थोड़ी देर पहले जहाँ से आप ड्रॉ कर रहे तो वहां तक आप कहाँ से है? हाँ सर, ये ये ना, वाला। हाँ अच्छा सर। ये वाला, इसके एक्चुअली कोई भी सॉफ्टवेयर में एक चीज करने के कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो इसका भी है। अगर आपने यहाँ पे बटन बना आपके इसमें आ रहा है, तो ये डायरेक्ट बटन है, ये दिख रहा है क्या मेरा विंडो। हाँ, हाँ सर, आपका विंडो दिख रहा है। हाँ, तो आइदर यू यू जस्ट क्लिक हियर। यहाँ आने के बाद आपको पाथ कुछ इसको टाइटल देना पड़ेगा। ये करेंगे तो ये आ जाएगा। एक ऑप्शन ये है। अनदर ऑप्शन है, आप प्रोजेक्ट में गए, ठीक है, और और यहाँ हाँ पे सर। आपका न्यू प्रिंट लेआउट है। यहाँ आए ओके सर। इधर, इसको आपने कुछ टाइटल दे दिया, ओके कर दिया, ये आएगा। दिस इज ओके स्टार्टिंग सर। पॉइंट, ये मैंने पर्पसफुली बताया था, और रेस्ट बाकी Sir, आपको एक्सप्लोर करना can है। you kindly repeat, sir, option one? देखिए, आप आपके यहाँ पे अगर ये वाला
टूल बार मेनू बार है, तो ये बटन यहाँ पे है। ठीक है, ये दिख रहा है बटन न्यू प्रिंट Okay, sir. लेआउट। Got it, ये sir. ये ठीक एक है, sir. ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, प्रोजेक्ट के अंदर भी जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको न्यू प्रिंट आउट लेआउट दिखेगा, न्यू जी प्रिंट सर, लेआउट। दूसरा ऑप्शन लेआउट सर। ये दोनों में से आप डाल सकते। ठीक है। सो यस सर। आप आप लोग बोलोगे यार ये कैसा फैकल्टी इन्होंने सिलेक्ट कर लिया, जो कि हमें बोलता है स्ट्रगल करो। हम लोग तो सोच रहे थे कि हमारा स्ट्रगल कम करने के लिए फैकल्टी होना चाहिए, ये तो उल्टा हो गया। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। Yeah, Priya, this is for your benefit only. As I told, I know after doing this exercise, you all will have, you all will create your own map composition, और वो 10-12 मिनट में आप लोग भी करोगे, मुझे पता है। लेकिन उस स्टेज में आने के लिए 1 घंटा तो मेहनत करनी करनी है, स्ट्रगल करना है, तभी तो आपको ऑप्शन याद रहेगा। अगर आप राइट सर। नहीं एक्सप्लोर करोगे तो याद नहीं रहेगा। जैसे हम लोग कार सीखते हैं, वो ट्रेनर के पास जाते हैं, कार जो ड्राइविंग सिखाते हैं ना, ड्राइविंग स्कूल वाले। ठीक है, तो वो जाते हैं तो वो भी डांटते हैं आपको, वो भी स्ट्रगल करवाते हैं। आपसे गियर नहीं पड़ता है, आपसे क्लच ठीक से नहीं, स्मूथली नहीं आता है, वो 4 बार देखता है, डांटता है। लेकिन उसके हाथ में भी ब्रेक और क्लच उसके पास भी रहता है, लेकिन वो हमेशा क्या करता है, आपको मौका देता है कि आप करो। वो तभी उसको यूज करता है कि जब आप एक्सीडेंट करने जा रहे हो। उनके पास ब्रेक रहेगा तो वो तभी अप्लाई करेगा, उसको पता है कि अभी आप जाके हिट करोगे। फिर वो ब्रेक अप्लाई करेगा, बाद में हमें डांटेगा कि ये क्या कर दिया, ये दिखता नहीं है, वो कैसे चला रहे हो। लेकिन वो दैट इज टू लर्न अस। ये भी वही प्रोसेस है। हम लोग थोड़ा स्ट्रगल जरूर करेंगे इसमें, लेकिन ये फिर वंस यू डन इट, तो ये तो फिर हमेशा के लिए लर्निंग होगा। और ये मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ क्यूजीएस के लिए नहीं होगा। आप कोई भी फिर जैसे मैप कंपोजिशन करोगे, तो उसमें हल्का सा चेंज होगा, मेनू इधर उधर होंगे, थोड़ा करने का वे अलग होगा। लेकिन वही उस सॉफ्टवेयर में भी आप सेम मैप एलिमेंट डालोगे, टाइटल डालोगे, स्केल बार डालोगे, ग्रेटिट्यूड डालोगे, सारे ऑप्शंस वही होंगे। एक बार किया तो हमें पता है कि हमें ये ऐड करना है इस सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे ये ऑप्शन था, उस सॉफ्टवेयर में हो सकता है कुछ और होगा। यहाँ पे अलग से कैनवास खोल रहा है प्रिंट लेआउट के थ्रू, वहां पे जरूरत नहीं होगा। जैसे कोई जो आर्क मैप में कर रहा है तो उसको जरूरत नहीं अलग कैनवास करने का, उसका वहीं पे एक बटन है, उसमें क्लिक करोगे तो मैप कंपोजिशन अपने आप आ जाएगा। तो चलो, लेट अस हैव सम स्ट्रगल एंड स्ट्रगल विथ एंजॉयमेंट। ऐसा नहीं, आप एंजॉय करके करिए इसको। और यू आर गो, मुझे पता है, मैं मैप कंपोजिशन, दिस इज नॉट फर्स्ट एक्सरसाइज, मैंने बहुत सारे नंबर ऑफ बैचेस में ये पढ़ाया है। मुझे ये भी पता होता है कि आप कहाँ स्ट्रगल करोगे, कहाँ नहीं करोगे। ये क्योंकि बैच आफ्टर बैच मुझे पता है कि क्या होगा। तो ये पर्पसफुली थोड़ा सा हमें इसमें स्ट्रगल तो करना ही है। और at the end of this exercise, I know everyone will be very much comfortable in map composition। और इसमें डेमो पे मैं आप ही लोगों से करवाऊंगा, so that we can learn from each other easily। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो आपने न्यू प्रिंट लेआउट लिया है, उसमें मैप ऐड हो गया किसी का? अगर हुआ तो मुझे थोड़ा सा इंडिकेट करवा दो, हम सब देखें किसी का हुआ है या स्टिल यू आर ट्राइंग। ओके, नो प्रॉब्लम, यू आर ट्राइंग, नो प्रॉब्लम। सर एक्सरसाइज 21 स्किप कर दिए क्या हम लोग अभी? यू मीन टू से क्वेरी 2?
एक्सरसाइज 21 सर, जिसमें हमने सर्वे ऑफ इंडिया के फाइल डाउनलोड करने थे कुछ। आई थिंक सो यू हैव ज्वाइन लिटिल लेट एक्चुअली। वो सर्वे ऑफ इंडिया का वेबसाइट नहीं चल रहा है, जी। तो इसलिए हमने थोड़ा स्किप नहीं किया। विल कवर इट। इवन ओके सर। आई विल also have the same data in another computer, but let us complete this. That we will take later on, no problem. ओके सर। Skip नहीं करेंगे, हम कवर करेंगे। Yeah, you got, I hope you got the map on your print layout. Sir, adding the scale is a bit confusing. Not confusing. I mean, there is one number in the for the map, that part, and then there is scale kilometers. There are Yeah, two. yeah, that is types. That is types. You can add anyone, no problem. I'll explain the difference, but you can add anyone for time being. No, I mean there is one scale in the main properties of the map. There is a big number. Mine is the world map, and then there is also for the scale properties. Also, there is this thing. We will discuss scale. We'll discuss, no problem. Hello, sir. Am I audible, sir? Yes, you are audible, but I don't think so, sir is here. That's Yes, why yes. he's not responding. Okay. Sukanta, would you like to tell me one thing? Do you know from previously about QGIS software and their uses, or because I'm not Yes, getting anything actually, from this class? yeah. I know, but I don't have a practice. In training, 7 days, I got a 7 days training on QGS earlier from NIRT. Oh, that's why. How did you complete it? Can you guide me? Which one? This map composing. Yeah. Yeah, that we will discuss. Okay. Uh, Okay, sir. No issue. at least you reach 50%. Anyone has reached 50%? Yeah, in my case, it is completed, sir. Okay, okay. So, what about others? Have you reached 50%? At least few map element you have added. Okay, I think it is taking time. So, you have to keep watch on the time also. Uh, so, first step in this is to bring the map. Bring the map on your print layout. Okay. So, how to bring the map on the print layout is our first step. My screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Now it is visible. So, how to bring this map? That map which is open in QGIS. So simply we can click Wait, Control P wait, or wait, otherwise. wait. I want to listen from others. Can anyone tell? Simply click on the add map option. Where is the add map option? Sixth option, Left side. left. Okay. So here, this you can
just draw a map, a square here, so automatically your map will come. Okay, so maybe later on I am going to give you one more exercise on this, but now let us proceed. So everyone is okay with this? So you have map here, everyone. Yes, sir. Yes, sir. So after that, which one you want to put? Title, scale bar, everything is here. You need not to go anywhere. You can add text. Okay, everything is here. Just you have to click and use, right? So this text you can add. You can add this what you called map legend. Maybe we have not developed legend there. It will not come, but whatever is there, we can add. So it is just showing me texture because we have not given anything here. This is legend. Okay, so oh sorry, I have deleted the main map. Okay, so here you have this one scale. You can add it. You can change its properties. Okay, so what else? You want to add frames. So all the options are here. Most of the options which are required. Okay, so quickly complete this so that we can again demonstrate once each and every step. Is it doable or difficult? It's doable. But I Mm, think there is some problem in my computer or software somewhere, because the point you are showing sometime it's not appearing. That's why I'm getting panicked. uh, There may be difference in, that's why. And that after all it's a new thing, so yeah, that's why you are struggling. So everything is here. North arrow, you just click and put whatever fashion you want, and you can. There are many. I mean options. You can choose, but you have to play. I cannot show everything. There are fashionables, different type of see different types of arrows, symbols. You can use any one. So artistically you can build your map. So all the options are here. See, one more clue, you don't go anywhere from this window. कहीं जाने का जरूरत नहीं, इसी में ही है। और दूसरा ये है कि हर किसी का लुक एंड फील जो है ना प्रॉपर्टीज पे है। यू चेंज द प्रॉपर्टीज, यू विल गेट लुक एंड फील। ओके, सर मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ना कुछ सॉफ्टवेयर में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है जैसे आपने शो किया। वो मतलब वो ले ही नहीं रहा है, अगर लेता तो बहुत कुछ हो गया होता शायद। चलो इसलिए मैं आई डोंट वांट टू वेट लॉन्ग टाइम। एनीवे आई हैव waited long time, but otherwise it will be difficult for us to complete the exercise. Let us see where is the issue. uh, सर मैप नहीं आया ना? no, show me your the main window. You close this. You are not added anything, just close it. Close. Let us see how it is not coming. And show your QGIS window first. You close all the tables also. Close it. Not required now. Close.
keep only one QGIS window. Which one you want to use, you keep that one. Rest you close. I think nothing is there. You can close this first one. Ah, yeah. Discard, discard. Okay, now you have only one QGIS window. What is the below? Yes, sir. Next. Yeah, next. See now Yeah, I you, remember. From yeah, here, you, click, give some name. it's Okay, appeared, and from here, sixth one. add button, Okay. add down, down. Ah, yes, click this. Draw any where, leave it. Later on, you can adjust. Yeah, Your it's map appeared. is here. Yes, sir. Okay, but now see, Abhi, see, map should be little, no, informative, or look and feel wise. So go back to the main window again, your main QGIS window. But this will able to draw it, make it little, no, beautiful. So go to the symbology. I mean, just give some color codes or something so that that display will come there. No, here, Where not should here, I? in main window, main QGIS window. But you, okay, anyway, you work on this, but while you do the map composition, first you have to tackle there in main window. Sir, is this main window or second window? No, 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 no. Because This is your print layout. No, okay, so this is the main one. huh. In main window, you have to give some color coding, something here, na, so that it will be visible there. Style manager. No, no, no. You go to the symbologies. Okay, there also you can do, but go to the symbology. Symbology. Here. Right click on the layer. Right click Okay. on the layer. Right click. Properties. Properties. Last one. Last. हाँ here. बताओ यार आप लोग, मैं ही बोलूंगा, किसी ने किया नीचे होगा। आपको अभी क्या करना है, आपको कौन से फील्ड में सिंबोलॉजी देंगे, स्पेसिस पे आप डिस्प्ले करेंगे। आप इससे करोगे तो सबको एक ही हो जाएगा। विच फील्ड, कम डाउन, सर ये ऑलरेडी अच्छा यहाँ पे है. you have to use some this one na, so that the different colors for the different points will come। यहाँ से करोगे तो सबको एक ही आएगा। तो which फिर field you can differentiate, but yeah, come down, down, you have to give, no, down। सर दिस इज द लास्ट, इसके नीचे नहीं जा रहा है। एडवांस में जाओ। हम्म, चाहिए। I just सिंबल want, wait, I, anyway you continue working on it, I will show you the symbology later on। Sir, I think we have to Can go I? single symbol. Sir, from there we हाँ, can change. सी हैज सिलेक्टेड सिंबल, सिंगल सिंबल। ऊपर आई थिंक वो चेंज करना I पड़ेगा think फिर। we have to change. ऊपर Sir, can I share my screen and नहीं, request? yeah, Abhimanyu will see this symbology later on, because anyway we'll see that, because that will be little diversion। uh, Sir, I am facing a couple of issues regarding scale and grid. So if you can help me out, I can. yes, we'll come to the scale also। So before that, go to your this one, print layout, open that one,
Okay, everyone is here with a map now. I just want to understand. Everyone is on map. सबके पास मैप है. अभिमन्यु यस बोल रहे. सोम यस बोल रहे. What about others? रवि यस बोल रहे. So लुबिना यस बोल रहे. ओके. सो ये मैप आपके पास है. ठीक है. तो Yes, sir. इसके बाद everything is here. You are just bringing the at least major map elements. All are here only. ठीक है. तो अभी हम लोगों को क्या क्या मिला है. टाइटल मिला है. प्रिया कैन यू ऐड टाइटल टू दिस. टाइटल मिला है. अभी हम ऐड करते हैं एक एक चीजें इसमें सो दैट. और आप लोग भी जिनका नहीं हुआ है यू कैन ऐड साइड बाय साइड. वेयर इज द टाइटल. आप लोग हेल्प करो प्रिया को. अभी टाइटल ये देखिए यहाँ पे. टाइटल होगा तो टेक्स्ट वाला कोई ना कोई आइकन होगा, सिंबल होगा इसका. जो कहाँ पे है. सर यहाँ पे है ना, ऐड लेवल दिया है, लेकिन इसमें ये कर्सर नहीं आ रहा है. सो आई एम लुकिंग फॉर, इधर देखती हूँ थोड़ा सा. आप उस बटन पे जाओ, क्लिक करो. ये है सर. इसमें क्या टाइटल दे सकते हैं सर? स्टडी रीजन. आप कोई भी टाइटल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है. अभी ये पॉपुलेशन मैप है या विलेज मैप है, जो भी है आप दे दो अभी एक टाइटल. आपका वो नहीं दिख रहा है मुझे. आपने कहाँ पे ऐड किया टाइटल. सर यहाँ पे मेन प्रॉपर्टीज में आके इधर से. या मेरा रिफ्रेश नहीं हो रहा है स्क्रीन. टाइटल दिख रहा है कि आप लोगों को ऐड किया हुआ. ये मुझे नहीं बहुत दिख. छोटा है सर, इसको बड़ा करूंगी शायद तब आए. करो करो करो. टाइप करो उसमें. उसके प्रॉपर्टीज में टाइप जाओ. तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन ये बड़ा, इसको बड़ा करना होगा ना. कहाँ पे उसका वो मुझे बॉक्स नहीं दिख रहा है. आपने कहाँ पे ऐड किया. यहाँ पे सर. ये जी आपने जहाँ पे लिखा है उसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके अच्छा ठीक है. हाँ बड़ा कर दो. चलो चलेगा फिर दिखेगा. प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज. नहीं आ रहा है यहाँ से. आपने कुछ लिखा है उसमें टाइटल. ये छोटा है ना. 1 minute, 1 minute. Can you please go downward? इन आइटम प्रॉपर्टी से थोड़ा नीचे जाओ. आइटम इसे प्रॉपर्टीज से. राइट साइड में और थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे. और नीचे. अभी थोड़ा ऊपर करो तो. ये पोजीशन साइज. थोड़ा ऊपर करो. कहीं पे उसका फॉन्ट लिखा होगा. फॉन्ट नहीं आया ना फॉन्ट. आ, अभी ऊपर अभी वो तुम्हारा मैप टेक्स्ट सिलेक्ट अभी करना चाहिए. सिलेक्टेड है. अभी तुम्हारा वो ये सिलेक्टेड नहीं है. स्टडी रीजन टेक्स्ट जो सिलेक्ट लिखा है करना वहीं पे चाहिए. सिलेक्ट करो पहले. नहीं समझ में आया ना, आवाज इन. मैप 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 में जो स्टडी रीजन लिखा है हाँ. उसको सिलेक्ट करो. सिलेक्ट करो. हाँ सिलेक्ट करके. सिलेक्ट नहीं हुआ Just है अभी. click, double click. ओके नाउ यू कैन फाइंड. थोड़ा नीचे जाओ. राइट साइड में नीचे जाओ. आ अभी गया देखो फॉन्ट. फॉन्ट लिखा हुआ है. फॉन्ट पे क्लिक करो. और नहीं, हम्म. अंदर नीचे 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 पूरा नीचे अंदर जो हाँ बस वहीं पे क्लिक करो. अभी चेंज कर सकते हो. अभी इसको 10 जो है उसको 100 कर दो. बहुत बड़ा हो गया. 100 पॉइंट समथिंग. Just give me some second.
यस, विजिबल। 100 तो अदरवाइज नहीं आ 50 रहा है। 50 कर दो, 50 कर दो। 55। आगे अभी उसको 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 थोड़ा रिसाइज। छोटा बड़ा कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो। नहीं, उसको उसकी एंड से इसको थोड़ा सा मैं और कम करती हूँ तो ये शायद फिट आए। 30 कर दो। 55। ये ठीक है फिर भी। हाँ, उसका जो बॉक्स है ना, उसको भी तुम छोटा बड़ा कर सकते हो। बस ऐसे ऐसे कर सकते हो, अगर बड़ा हो गया। अभी ड्रैग करना है तो उसको ड्रैग भी कर सकते हो, कहीं भी रखना है। ये ड्रैग हो रहा है, ये वाला ड्रैग नहीं हो हाँ रहा हाँ, ना। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तुम करो, होगा। ओके। अब इसमें स्केल ऐड करना है ना। वैसे ही जैसे लेवल ऐड किया, वैसे स्केल ऐड। जैसे टाइटल ऐड किया है वैसे सारे का सेम ही, प्रॉपर्टीज भी सेम है, सबको सेम ही ट्रीट करना है। ओके। हम्म। थैंक यू। लेकिन मुझे मुझे आपका वो नहीं दिख रहा था। अभी भी मुझे आपका टाइटल वो दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ मैप दिख रहा है। तो सर मैं रीशेयर करूँ फिर से। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक हो सकता है मेरे एंड पे, क्योंकि इनको बाकी लोगों को दिख रहा है ना। नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है सर। हाँ, वो शायद मेरे एंड पे कुछ हो गया होगा इंस्टॉलमेंट। तो ठीक है, जैसे अभी आपने किया है वैसे बाकी एलिमेंट भी आपको एडजस्ट करने हैं। ओके। ओके तो सर। ख्याल से थोड़ा और टाइम देते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ना आपका किसी का मैप कंपोजिशन हो जाए। सर आपका वॉइस भी ब्रेक हो रहा है। हाँ, मुझे थोड़ा मेरा नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा, आपका ये नहीं दिख रहा। ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आपको सबका ये कंपोजिशन एक बार आ जाए, एटलीस्ट 20%, थोड़ा सा एक लाइन में। उसके बाद ही फिर हम उसको करते हैं discuss। तो अभी मैं बजट टाइम आप जो बोल रहे थे, मुझे थोड़ा स्केल का बताओ, क्या दिक्कत आप बोल रहे थे, कुछ इशू था स्केल से रिलेटेड। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन आ रही है सर? आ रही आ रही। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि ना, एक तो ये मैप वाला जो है, इसमें भी एक स्केल है ये वाला, और नहीं नहीं, फिर स्क्रीन नहीं, आपका वो QGIS विंडो शेयर करो ना। ये मैप वाला नहीं आ रहा सर जो, एक मिनट, मैं दोबारा, नहीं, आप बाकी लोगों को दिख रहा है क्या मैप मैप का विंडो? दिख रहा था, दिख रहा यस था। सर। अच्छा, तो रुको रुको, अभी मैंने दिख फिर रहा होल्ड करो, मेरा मेरा शायद ये जिसमें कनेक्टेड हूँ उसका शायद नेटवर्क पुअर हुआ है, लेकिन कनेक्ट अदरवाइज वेट करो थोड़ा। था। Yes, Abhimanyu, I can help you. Yeah, you continue. By that time, I will be just off for half a minute. I'm just changing my network. You continue करो अभी। इज Uh, इट सुकंता? yes, yes, yes. Sukanta, I would like to understand what is this scale, the meaning of this scale, and Actually, how is it different from this scale, which is this one? okay, okay. Actually, the numbering, what we can you please go back to that screen where it was showing some numbers. This, yes, this is the right now the scale, means 1 unit equals to this much unit on map. Okay, okay, Are you able to get me? I see. Yeah. For example, if you will calculate 1 kilometer on map, that is equal to this much of kilometer on actual, Okay, on ground. okay, okay, But whenever you were adding scale to the map,
you are showing on vertical lines, scale bars. Yes, yes. So here, if scale bar is kilometers, then it should be actually um, quite a big number, right? Yes, yes. It should be maybe one, two, three, four, five, like this maybe. 1 kilometer. It is no, no, no. Actually, this is level unit multiplier. Your scale bar will show this much of distance. Okay, so it should be point 0.001 then. No, no, no. So How so if if okay, you if I will have in centimeter, send you better you please do it on kilometer. Because this okay. is world map, na? Yeah, you cannot show in centimeters. So 1 centimeter in the map will be multiplied by, or is it That other way number. around? No, no, will be multiplied by that number. What you were earlier showing on the top number, something around uh, this much, this much. So this is basically 17 crore. Yes, yes. Maybe it is very small. Like see, So how is that related to this thing then? So basically, in my scale, 1 centimeter should be kind of 1 kilometer should be multiplied by where is your scale bar in map composition map? scale bar is this one, but it is not showing because I think the this number is very less. You please take it around 10,000. Okay, now it is still Still, it gone. is not showing. I So thought delete that maybe one when I am and back. delete that one. Change my network now. sir my screen is visible. Yes, yes, yes. Now I can see your screen easily. So basically, So, I have added, yeah. where is your scale? That is the issue. So scale is somewhere here, but it is not showing maybe because of the multiplier. So so here this scale, thanks to Sukanta, I understood that this is what translates from my map to the actual units on the Earth surface. Right. So so now I would like to relate this thing to the ratio in the scale bar, which is this thing. So scale bar units would be, yeah, you see this thing is actually my scale right now. This Hmm. but it Very is not small. appearing. Yeah, so I think it has to do with this number, but I'm not able to get the concept of this scale bar units because probably that's why my grid is also not showing. Can you put one more scale, or let me add here. I will delete this thing then. Yeah, let me. I will delete my this thing and again I add a scale. Just wait a minute. So Just a minute. Huh? I will. Can you see this scale? Is it you are visible? sharing this. I will stop sharing and I will. Just for a moment. Just stop. Again, you can share. Just I want to see the what is the problem exactly. Can you see this one scale Yeah, here? yeah, it's visible. Yeah. So this is scale bar one type. This is showing you two colors. Okay. There is one more which you can say
1 is to say some 50,000 or 1 that is ratio. This is bar and that is ratio. Ratio, instead of showing this, it will be in numerical, like 1, 2 dots, say 5 lakh, 1 is to 5 lakh. Okay, both are the same, and it will adjust according to your this one map. Now you see this one. Let me try here if it works. I see here. You can see here. Now I am zooming the map. Okay, but still it is as it is. You can see it is as it is. So when you are zooming your map, okay, so scale will be as proportionate. So what it indicates, one factor this is a 10 kilometer. Now if your map is big or small, that doesn't matter. Whatever the distance here, say for example, the distance is say 10 and unit is a kilometer. So this much distance you map or measure on the map here will be equivalent to 10 kilometer on the ground. In case of this scale bar, if you have the ratio like 1 is to something, 1 is to 5,000, 1 is to 5 lakh, 1 is to 5 million, that scale, so that also gives the same meaning, like 1 centimeter on the map in our map will be that much on the ground. Okay, so if your unit is kilometer or mile or whatever, so 1 on the mile map is that much on the ground. If it is kilometer, then the kilometer. If it is mile, then mile. If it is meter, then meter. So this is the relationship of the scale with the ground feature. Up to here now, I'll stop, and just I want to listen what you were saying. Uh, So what was the issue in the scale, Abhimanyu? It is very small, or it is not coming properly. I I think it is. So there is one scale of the map which I understand. That's also that should be the scale of the um, scale bar also, right? One is scale bar scale, one is map scale. I will just show you again. So if I change this number in my ratio, basically 172450449, if I have this same number in my ratio, that should be Abhimanyu, the, yeah. in the top, see under style single box is written under just below, just below this one. If you will change this one to numeric, your scale will show in numeric. Hmm. So should I then customize? No, it should automatically. This is actually grayed out. No, you have selected the scale bar, na? Yeah, yeah. This is my scale bar. Automatically it should come. There is some issue, maybe from your software or something. It is not coming in numeric. No, sir, not coming, sir. No, for numeric, the this thing grays out. Okay, okay. एक बार कस्टमाइज में जाकर करो.
So this is just the decimal places, I think. Show thousands and this thing. No, in numeric, are you taking some values here in the scale or not? Nothing, sir. If I make the scale, no, it grays out. Wait. Put your scale bar inside the map canvas. Again, you take scale. You have only one QGIS window there, or you have multiple? One only. Okay, put inside this one, this Inside this box, one, up. Yes, put. it What shows it is like showing this is thing. very scale or But numeric. no, It is in showing numeric, bar the or units, it's a very thin line, vertical line. It actually no, no, no. It is see, you are projecting world map. Here, the map is world map. It's a very huge, very big, and you are representing on this paper. So that might be one of the reason. Like, say, 1 is to whatever you say, 1 centimeter is equal to how many kilometers on the ground. So that ratio is very thin and very narrow. Maybe because of that, it is showing very yeah. So I, small. I I had changed it actually. I had changed it to what was in the scale for the map. So now, so this is my. So now it should change, no, dynamically, or should I again No, it add the will scale? change. It will change, but only thing that ratio is very narrow. Maybe I don't know, one unit here on this paper, This maybe is very the big main on the property. ground. This is the Uh, number, sir. The scale in the main properties. There is this 17 crore factor. so that's why it's a very big So now, number. if I so now yeah. So this is what is the relation between this number and my this scale bar units and label unit number. I did exactly the same thing. 17 crore. I maybe should I again? I should. No, map is very big. I mean, so that's why the ratio will be very high. Let me put here small scale, same thing on the small scale bar. Or anyone is having smaller map other than this. Anyone has? Hello, sir. Sir, Yes, Ravi. I am able I am to put a scale on the map layout correctly, but it was very hectic process. But maybe I can show a share screen. So Yeah, you share the screen for benefit of all. But it is not, I mean, complicated process. It's a very simple process. In 2 clicks, you can add map and you can play with, add scale and you can play with its properties. It should not sir, be much complicated. may I share my screen? Yes, please share. Let us check. Yes, here, sir. I had put in the scale, uh, Hmm. but it was very hectic process. I have to here is the scale menu, and it Huh. has many options. When you were uh, t- talking about scale bar, I was doing all this, and I don't know how, but I am able to put this scale bar as I wanted. But it has many Hmm. process as I have
I have made this layout in Arc Map desktop. It was very easy, but in QGIS it is very hectic या process. या इफ यू कंपेयर बोथ, यस आर्क में थोड़ा इजी है। वहाँ पे स्केल आपने ऐड कर दिया, स्केल बार एंड प्रॉपर्टीज आर वहीं पे आते हैं इमीडिएटली। Yes. राइट क्लिक करो तो सारे प्रॉपर्टीज मिलेंगे। लेकिन इसमें भी हेक्टिक नहीं है, क्योंकि इसका एक अपना प्रॉपर्टीज का सेटअप है। वहाँ पे राइट क्लिक करो तो कलर चेंज कर सकते हो, बहुत कुछ ऑप्शंस आते हैं, फॉन्ट चेंज करो, कलर चेंज करो। तो यहाँ पे वही सारे ऑप्शंस आपको ये राइट कलर के जो बॉक्स है इस मेनू में आते हैं। Yes, sir. Maybe I have to practice one या many इट्स अ times गेम ऑफ to. प्रैक्टिस ओनली, बिकॉज वी आर स्ट्रगलिंग फॉर द ऑप्शन एंड दैट्स व्हाई वी आर प्रैक्टिसिंग। कहाँ से होगा? जैसे आपका अभी स्केल बार आ रहा है, सबका जो भी है कलर ब्लैक आ रहा है, अगर आपको ब्लू करना है तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहीं पे है। ओके, Yes, sir. Okay. चलो अभी जितने बचे हुए हैं सारे लोग ये पूरे एलिमेंट्स डालो जितने हैं, सो दैट वी कैन हैव अ कॉमन डेमोन्स्ट्रेशन। By that time you are working around, so for each and I am just playing around some properties of this scale bar. So it is almost similar for all the map element which you are putting. Everything you will get here. So you have to select that particular map element and you can play with it. Okay, so I'll put here, maybe for good visibility I'll put here. I'll make little small. Okay, let it be in the middle. So you have styles, you can change here according to your requirement. You can see instead of bar, I have changed it into the line. Okay, you can change it into these strip lines. You see all the scales in different maps. So there are many options. So I will just go through few. So this is numeric. Hello, you can have this type of bar. So there are many options. You can choose whatever you want. Okay, similarly, uh, what we have taken line, na? Okay, hello, single. Anyway, so similarly, you can change the units here, meter, kilometer, centimeter, whatever fashion you want, you can choose. I'm just doing undo one or two times. Okay, this was the original where it is coming from the your scale button, scale bar button. Now you can make it in any unit you want depending on your need. So I can make it in a kilometer. You can see the values has changed. See, I'll again go back. See, I will make in a centimeter. You can see the values has changed. It's very big values. But when I convert it into some bigger like unit like kilometer, so it is 30 and 60. Okay. So you can play around this. You can have the, you can change the orientation. So it is not fitting. Let me keep as usual.
landscape. You can change width and height if required. Oh, that was for layout, whole layout. Okay, so you can change here scale bar unit accordingly. The values will be adjusted. It is dynamic. If you want to give some label instead of km, you can change this also. Similarly, you have customized number format here. You can choose rounding number. You have many options, so that you can choose the number format whatever you want. Sir, does it gray out for you also when you choose the numeric in the style? Numeric. Let me do again. Uh, s- Style numeric. No, it is giving number, not graying out. Bar. Okay. So you can play around it. You can check with these numbers. Is it changing? Now instead of black, I want this green color, or I want some another color. Say, for example, this brown color. So you can just go here and you can change. So I want this brown and green. What your, I mean, fashion you want, you can change here. Similarly for lines also there is option you can change. Okay. Now font I want in blue color. So text all I want into the blue color. So it is changing blue in a blue color. Okay, similarly, I will go to the position and size here. You can change everything. Whatever options are available, you can change anything. Okay, so millimeter to meter for this, huh? So you can use this position and size. Then, if you want to put some frame, okay, that also you can put. So now for demo purpose, I will select some color here. So red and green is there, so I will put some different color. This color I am putting. I don't think you have noticed this. Let me change for the frame. We were so frame color I have changed, but it's small line. That's why you might have not noticed. Let me change its width. Can you notice this color change? Some pink color I have added. Then similarly, you can go to the background. Right now it's white, but I want to make it something, some different color, contrast. Maybe let me put black here. Oh, black is very bad. Some. So this way you can change properties, all the properties. So I mean, these are the few things you can do with every atom. Every atom map, every map element. Where is this is my north arrow. So I'll put just north arrow here. So you can do all similar things here with north arrow also. Okay, so you can do whatever we did, like for the scale bar you can make it here for the this north arrow also. If you want to put a frame, you can put frame. Put a frame. I want to put background, so I have to select the color here. Maybe background. I put this parrot green. So this way you can
put. Even if you want to change the style inside, you can change the style. So all everything you have to do with this properties area. Okay. So this is almost same for all map elements. In options there will be little variation, but it is almost same. Even if you randomly uh, change the things, then also you will came to know what is happening. See, I have rotated this north arrow. I mean, based on the utility, you can select and apply. Okay. You can add pictures. You can add shapes. Excuse me, sir. In your map, the multiplier was 20, I believe, right? Or something like that? Mm, multiplier in the, you mean to say scale? Escape bar, yeah. Uh, this you are saying? Yes, sir. This is 10. I cannot read actually this No, number. no. This you can change, but see, this is a small area. This is one taluk, not one taluk. It's three taluk, partly three taluk area. It's a small area, and what you are using is your world map actually. It's a big area. Yeah, so I can modify the ratio accordingly. So in your map multiplier and the original map, that number, that's what are the numbers? Yeah, here it is. Multiplier is 1, and what is the number in the sir the map? If you go to the map and then see the Ori- Which one? You are saying this one? no sir, I mean in the map composition view only. When you click on the map one properties of map one, there is another scale number. This thing. What was Map one. 17 crore in Okay, my yeah. So here this it is. one. Yeah. Yeah, 439304. Okay, thank you, sir. I'll just try to play around with these numbers and then I'll just Hmm. thank you. Yeah. No, but you can see your canvas is entire globe. So very big area. That also need to
be in consideration. In fact, if I reduce my order of magnitude by 100, the scale appears, but the map is zoomed in completely. So that's why I said it's a big area. Otherwise, you just pick up few dots, export it, and then you put this into the print canvas. Then it will the scale will behave properly. Yeah, but in this world map view also there should be a solution, no sir? If I would like to have the entire world this thing. Yeah, then you see in case of the bigger, I mean the regional or continental maps, so it will be in miles, no, or maybe hundreds of miles. You have to increase accordingly because one unit on map will be uh, thousands of kilometer in ground. Say one centimeter or 1 millimeter on map on a global scale, 1 millimeter on map can become say more than 100 or 1,000 kilometer also because it's very ratio is very narrow there. And here, if we yeah, the CRS use project CRS. If we change the CRS, then would it? This one you are saying? Yes, sir. Here, if we make it UTM and change it to kilometer something, I don't know. No, kilometer that you can do without changing this CRS also. Okay. Yeah, that option you can change easily. Changing map unit is not a problem. Let me show you. Option is here. Even directly here also you can change kilometer to millimeter, meter, whatever you want. I will change to feet. So I have changed to feet. Let me remove this box. No, it's very different color. I hope now you are able to see. Sir, So could you please zoom the map? The it is. Yeah, yeah, yeah. Thanks. Yeah. so now it is in feet. So you can change any unit here, kilometers. Accordingly, the this will change. So I think, guys, please try to finish as early as because I don't want to leave you without doing. But at the same time, we have to keep watch on the time also. So maybe you try to finish maximum in 10 minutes so that we can again will have one more demo from your side and then we'll close this exercise. Sir, am I audible? Yes, yes. Sir, I'm saying how to draw a grid line. Okay, you I mean pause this and add other map elements. We'll have demo maybe in 10 minutes. So there we will add grid lines. Okay, sir. Yeah.
Hello, sir. Yes. सर जैसे मैं पहले बोल रहा था कि वो टोपोग्राफ वाला वो कवर हो पाएगा सर? ऐप टोपोग्राफ कैसे रीड करना है? Uh, Acha, that exercise number one. I mean, what is that exercise actually? It is not listed here. That is information on the uh, toposits, or what exactly it is? Yes, yes, sir. Information about opposites, sir. Okay. I'll cover that. Yeah. I'll cover. Uh, I mean, there is see, some points, sir, like broad broad idea is that you have, see, for example, India, you have mapped India maybe at 1 is to 1 million scale, for example. Then uh, million seats, 1 is to 1 million seats are there. Then after that, again further it is divided into 1 is to 250,000 scale. Then further it is 1 is to 50,000 scale. And then further it is 1 is to 25,000 scale. So that is the sequence. yes, sir. Okay, so I have some presentation also on this. I But have anyway, doubts like on like sir, what are the relief features contour represent for different types of slopes and different type of okay, landforms yeah, and then different type of valley. These things are sir. okay, then I need to project one toposit and I can explain that also. But Yes. we'll do that. Maybe Okay. 15 minutes we can spend. No problem. So please complete this as early as possible. Are you done? Hope most of you might have completed. So let us discuss little bit. So किसको लग रहा है कि मेरा बहुत ही खराब बना मैप कंपोजिशन? जिसको लग रहा है कि मेरा अच्छा नहीं बना, नहीं समझ में आ रहा है, या ऐसा किसी को फील हो रहा है अभी? Okay. So now what we will do, uh, again we'll add some of the map elements. Let me see the chart. Except for scale bar, rest is okay. Okay, Abhimanyu. So, Abhimanyu, your scale bar issue is, I mean, it is very small. That is the issue. Yes, sir. I tried to change the size of the segments also, but beyond 1000 QGIS doesn't increase the size of the segment because it seems that the segment of the scale bar is tiny. Maybe for can you project and open fresh QGIS? Let us tackle that. Your project you keep as it is. You share the screen and add any vector to your fresh QGIS. I'll share the Other than screen, sir. other than this, it will work. But anyway, still we'll try. It will take only few minutes.
So you mean Let that it, I let import? this you minimize and keep as it is below. We will not touch this. Okay, so Keep I minimize this, and open fresh. open. You mean new map composition? New QGS. QGIS. Okay. You I minimize will. this all. Yeah. This we will take a fresh QGS. Yes, sir. It's opening. Yeah, you are using 3.3. Komal, okay, joined. Login, okay. You close that to some error. And add any of the either vector or raster, doesn't matter what you are available with you. Okay. Some error is showing, that is something different, na? Font installation, I guess. It's Okay, that don't, no problem. You just close it. So everyone can see, actually this is again one of the demo. So you have raster. Okay, most of us did only on vector, but okay. So now you take this into this one, your print layout. See, you see now he has used different option for adding map. He has used different options. So there are multiple options. So once you are comfortable with software, automatically you will come to know these options. Okay, now you add the scale. Which scale bar you were adding? Add it again. Is it behaving differently than earlier? yes, sir. Earlier it was like it was not Very showing at all. small. Yeah. So this is my scale. Hmm. Just a kind of a just a vertical this thing. Yeah, because the size is very big. It's very big. Okay, come to But that one. the raster one or the Raster one. Just we'll see the scale, other options, whether it is working for you or not. You play with its properties, changing. yeah, yeah, it's changing. Like feet, for example, has become a bit um, centimeter, and Okay. then So no worries. I think that there is no problem. That is mostly because of the bigger area, bigger canvas. Projecting. See, I tell you one more, I think, good exercise. See, though Earth is round, I mean, just like a spare shape, or you can say just round roughly. But if you measure its circumference, say starting from one point, if we measure the circumference, roughly you will get the length. I mean, how much say east west and how much southwest, south to north direct distance, east to west distance. Okay, though it will vary based on the shape and where you are measuring, but we'll take roughly the center point.
So you know how much distance it is. You consider that distance, that use distance you are putting on your paper. I don't know what is the paper size, maybe A4 or A3. You might have, yeah, by default it has taken A4 or A3. So you are putting all this together. Even you zoom it, so multiple dots will be showing you as a single dot. So it's a huge, and that's why the scale is proportionate, because you cannot play with the scale. See, so many dots overlapped on each other. So if that is the area we are projecting on map, so scale will also behave proportionately. We don't have option to increase the scale bar's length or decrease the scale bar length. It is dynamic property. Based on your map, it will automatically change. So you mean that if I zoom, then my scale bar should be, then in that case it should be visible if I zoom. But see, it will be visible. See, there is one option here also in the properties. Either you want to keep it fixed or flexible or dynamic something. There is this fixed width and segment width. What Uh, exactly does it mean? no, this is fixed width of the bar. This is no, this is not that one. Okay, okay. I think I managed slightly more. Uh, So if I you go change to the the. fixed, But what is the unit for this? Unit should also. Okay, it's a ratio. But what is the unit for ratio? Come down. What is the ratio? What unit it is taking? Oh, it is taking map unit or what? Is it yeah, map? map unit. You change this one again. It will. Is it? It will change to very small. You change to kilometer. Hopefully, it will again become invisible. Yeah. So, but there is a difference. Let me tell you. If you now you have to check what is the map unit here at the bottom. You can check it. So, in the sense of map unit, it is showing you a little bigger. But what is your map unit? Map unit can be degree, map unit. I mean, you have to check depending on the projections used and all. So, proportionately, like this first segment 0 to 25, based on your map unit, is the distance on the ground. How do we check the map unit, sir? What is the map unit? No, map unit is the unit you can get at the bottom. Maybe if you can go in your QGS window, uh, there you will have scale and coordinate system. I actually tried with another projection, but I was just experimenting. But I think this is not. No, but see again, no, that projection will, that is different thing, because your map generally say by default if you open, so it will be in meters by default. I mean, without any considering any projections. But if your map is projected, then based on the projection parameters, you will be having the map unit. Like all this is divided into degree minute second. If you are using say LCC type of, or if you are using UTM, then there the unit will be different. But this map unit will be having say, if you are using degree minute second, for example, I am giving one segment, 1 degree will be having say your 60 minutes. So that distance is fixed. 60 minute will have some distance on the ground, or 1 minute will be having this distance, 1 degree will be having this distance. So in that sense, it's a map unit. Okay, I think no issue with the scale bar. You can play around its properties.
See, that day I was telling QGIS is a huge software. It's a, I mean, just like a sea. The more you dig, you will get more complexity of it. So I think Abhimanyu, are you okay with scale bar? Not completely, sir. I think I will have to experiment more. I mean, it's still a bit confusing to me, but yeah. No. Then another case, but the race another raster, is it coming okay? You come to the raster because this Yeah, area in is the very. raster it was fine. Yeah, I had changed this thing actually. Hmm. This should be kilometers. Yeah, this seems to be okay for the raster. No, even earlier is also okay. Only thing, because of the larger area, we are projecting on smaller this one canvas. That's why there is a problem. Even in fact, here also, if you take few of the point and display it, it will work. Or you can just select randomly some area, few points, export it, and then project that points. That will work. So, for example, if I change this thing No, 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 no. See, here, you are this changing, uh, then where is your map? Uh, Sir, exactly what you told, I did the same, and this is working for me. From that Yeah, large it data, will work. large area, I Yeah, it will work definitely. See, now just hold on, Abhimanyu. Now, what you did here, that also worked for you. But the difference is that you see where is your map on this scale. Where is you cannot project entire globe here with this scale, right? Are you able to project? so when I basically change this thing to the actual one, it disappears. My yeah. Yeah, because the area is reduced. Your canvas, see, you have say A4 size of the map, fixed canvas. So what we are doing here, we are taking A3 map and we are squeezing on A4 paper. So that A3 we are squeezing on A4 paper. So what happens? Everyone is coming closer. All the features on the map, we are squeezing them. So at the same time, we are squeezing this your scale bar also. In no way, I tell you in other words, in no way it is possible to fit this into your this small canvas world map. No way. We cannot. Even if you see the features in the map, they are so overlapped on each other because the dot which is here, that is also very important that two features we can make. So Sir, your we voice are is putting a breaking. very. But sir, imagine a scenario where we have sparsely populated dots where there is no overlap, but the scale, but the it is the same. This thing extent is the same. So in that case, shouldn't we have a scale? Let's say a segment of the scale, a small segment of the scale can be even 2,000 kilometers in the actual this thing. So, and if it's dynamic, then it should appear irrespective of whether I change from A3 to A4. It should adjust its size accordingly or the units. So there should be no reason why it should disappear. It should exist, but it should change the scale, or I mean the units or the size maybe. I mean, even if it's A4, how should it matter? The rectangle should appear. No, here in your case, scale bar is appearing and it Yeah. is So changing also. But if you are fitting everything together in a view,
then it is becoming very small. If you change, like earlier you did, you reduce some value, so it has changed, but you were unable to see entire globe on this map. Partly you were able to see. Sure, sure. But suppose I would like to have a bigger rectangle representing my scale in the piece of paper, and the segment should be such that it represents the value on the ground, the size of so that it is visible also. So what is stopping me to draw it in my map? If I have to draw it by hand, not through ArcGIS, I'll be able to draw. But here also it is coming, na? No, no. Here it's coming, but it's just a vertical line. I mean that even if I take a printout of this, I can always make by my hand my scale that represents what I actually want to portray to the user. I mean, it should not squeeze. That's my point. That it should Yes, adjust according to yes. the. See, now I will put in a different way. Still we can make it here. uh, Still we can make it here also. See, you consider either total length or width, it is around 40,000 kilometer. Yeah. Roughly I'm saying 40,000 kilometer. So this 40,000 kilometer is having many features. Now what is the length of paper? 20 centimeter, 21, if it is a for 21, 21, 22 something it is coming. So you are fitting, say, approximate 40 kilometer area in 20 centimeter, right? That is the proportion. Hmm. So so in 1 centimeter, how many kilometers you are fitting? Yeah, around 2000. So 2000 kilometers. So then in 2000 kilometers, how many places will be there? This dot, one dot is a place if we consider that. So in 2000 kilometer, if I start from the Delhi, so I will go out of the India. If I start from the Delhi, then UP, MP, again I came to the come to the Gujarat, Maharashtra, and then the sea, Arabian Sea, for example. So it will, it will go away, go far away in the Arabian Sea also. I don't know. It may reach to the Gulf countries. Some of the No, I mean, within India, Delhi to Bangalore is roughly 2000 kilometers. So, 52,000 kilometer. no, 2000 Delhi to Bangalore. Huh. It could be aerial distance could be even lesser, around 1800 to 2000 roughly. So, so this, I mean, this part could be represented in the diagram. I mean, the scale. So So 2000 kilometers is still, we can represent it in the A4. Let's say 1 centimeter being 2000 kilometers. That's perfectly possible to represent in the piece of paper. so how you are saying one watt unit we can represent, but one is what? Is it centimeter, millimeter? Because So you have to fit entire 20, distance. 20 centimeters was 40,000 kilometers. So each centimeter became 2000 centimeter. Each centimeter was 2000 kilometers in the map. Each centimeter is 2,000 Kilometer. kilometer. Yeah. So why can't I have a rectangle of 4 centimeters with the ticks, so that, I mean, in the piece of paper, a 4 centimeter rectangle representing 4,000. Yeah, yeah, 20 was 2000. So yeah, a 4 centimeter would represent 8,000 kilometers basically. No, actually,
See, cartographically, it is not possible to put a global map on a, and put a scale to it until and unless your map is bigger in size. That's why on most of the global maps, you will not find the scale bar. Very difficult to put scale bar because your line, say you will draw some line, maybe, so that line, the tip of pen will also matter in that case, because tip of pen will also have, will take few kilometers. If so, but only the issue is the representation here, because of the scale is very big. Okay. Okay, sir. Yeah, but for smaller this one, it will work. So let me know any issue किसका ऐसा हुआ है कि भाई मेरा हुआ ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कोई है मेरा, ना मैप ऐड हो रहा है, ना मेरा टाइटल आ रहा है, ना मैं प्रॉपर्टी चेंज कर पा रहा हूँ, ऐसा किसी को फीलिंग आ रहा है कि एकदम क्यूजीआई जो है ना ये कुछ काम का ही नहीं है, इसमें कुछ होता नहीं है, ऐसा किसी को लग रहा है, नहीं हो रहा है? चलो, थैंक गॉड आप लोगों ने मेरी इज्जत रख ली थोड़ी सी, नहीं तो ऐसा आ जाता तो मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता, बट स्टिल गुड आई थिंक. ओके मनप्रीत, सो लेट मी नो, डू यू वांट वन मोर डेमो ऑन दिस और आर यू ओके? थोड़ा सा कब मुझे कन्विंस करो, आप लोग ठीक हो, डेमो करना है तो कर सकते, डेमो भी कोई प्रॉब्लम नहीं करने में. क्या फीलिंग है, शुड वी गो फॉर अ डेमो और आर यू ओके विद दिस? सर अच्छा, आप डेमो होता तो अच्छा होता, कर थोड़ा देते. क्लैरिटी आती। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें जो है ना, अ, जिसको ज़्यादा ये टॉपिक, जिसको एक्सरसाइज डिफिकल्ट लग रही है ना, आप में से कोई आ जाओ डेमो के लिए, ठीक है, कोई भी आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं. और इसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है. वी ऑल विल हेल्प यू, वेयर इज द ऑप्शन, हाउ टू पुट इट, हाउ टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज. तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा. इवन इफ यू आर पुटिंग न्यू कैनवास, न्यू मैप, सब कुछ चलेगा, जीरो से भी हम कर सकते हैं इसको, 5 से 7 मिनट लगेंगे. कौन करेगा स्क्रीन प्रोजेक्ट? एनीवन कैन प्रोजेक्ट स्क्रीन? सर फिर मैं ही करती हूँ। अच्छा ठीक है, करिए. और आपके कुलीग जो है आपको बताएंगे, थोड़ा फास्ट करना है ऑप्शन फटाफट, सो दैट वी कैन फिनिश इट. करो, शेयर करो एंड ओपन फ्रेश मैप, नो प्रॉब्लम. इवन आप अपना पुराना आप छोड़ भी सकते हो, फटाफट नया मैप डालेंगे, नया प्रिंट लेआउट बनाते हैं और उसमें सारे ऑप्शंस, जितने भी मेन ऑप्शंस है वो करेंगे. और आपको बोलते भी जाना है साथ में क्या कर रहे हैं, वो भी आपको आपके जो colleagues से फिर पता चला कि आपने गलत बोल दिया तो वो लोग बोलेंगे आपको कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है, सो दैट सबका एक रिवीजन भी हो जाएगा. यू कैन ओपन फ्रेश आल्सो इफ यू रिक्वायर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेश भी कर सकते हो. एक काम करो, इसको मिनिमाइज करके रख दो एज इट इज, जस्ट मिनिमाइज इट, मिनिमाइज. ओके, एंड ओपन फ्रेश QGIS. Let us start from the scratch.
नो 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 ये अच्छा ओके. Now you have any raster with you? Raster layer सर पहले वाला ही है. एक ही है आपके पास? हम्म. अच्छा, उसमें से कुछ पॉइंट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो? सर नहीं आइडिया है कैसे करना है. अरे इतने सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, अभी कितने एक्सपर्ट्स हैं? 25 एक्सपर्ट्स बैठे हैं. मेरा मेरा थोड़ा ख्याल करो, लोग बोलेंगे कि क्या एक्सरसाइज ले रहे हैं कि आपको लेयर भी एक्सपोर्ट करने नहीं आ रहा है स्टूडेंट को. कोई बात नहीं, आप ऐड कर दो उसको, हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट. बताओ लोगों कैसे करेंगे एक्सपोर्ट. ना ना, वेट 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 वेट, यू ऐड द लेयर फर्स्ट हियर. इसको कैंसिल कर दो. चलो एक्सपोर्ट आप बाद में कर लेना, कुछ नहीं, आपको पॉइंट सिलेक्ट करने हैं इधर एट्रीब्यूट से या यहीं से कर्सर से सिलेक्ट करो, और उसके बाद उनको एक्सपोर्ट करना है. ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट सिलेक्शन में, मल्टीपल ऑप्शन से. कोई बात नहीं, आप ऐड कर दो. लेयर में जाइए, लेयर, ऐड लेयर, वेक्टर, वेक्टर लेयर, यस. जहाँ पे भी है नीचे नीचे, हाँ इसका पाथ दे दो. क्या भी आपने डाउनलोड करके सेव किया होगा ना? ये वो वाला ही करो. था. हाँ कर दो. वो फोल्डर है ये? हाँ ठीक है. ऐड. ऐड करके क्लोज कर दो. अभी ये वाला मैप कंपोजिशन करना है ना. हाँ आप बोलते जाइए साथ में. आप गलत बोलेंगे तो बाकी आपके दोस्त बैठे हैं वहाँ पे कैंची लेके, पकड़ेंगे वो, और आपको बोलेंगे ये ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन है. आप बोलते जाइए और एक्सप्लेन करते करते करिए. अभी आपने क्या किया, प्रिंट कैनवास लिया, उसको आपने लेबल कर दिया. बोलते जाइए. सर यहाँ नेक्स्ट ड्रॉ करना होता है. कहाँ से आएगा बताइए आप लोग. ऐड मैप से यहाँ से ये. फिर यहाँ से ये नॉर्थ अगर हम्म, देना है तो दे सकते हैं अपन नॉर्थ. देना ही है, इसेंशियल है वो. हाँ सर. फिर यहाँ से सबटाइटल के लिए स्केल सब लेवलिंग करने के लिए यहाँ से ये दे सकते हैं. डाल दीजिए लेबल भी कुछ. स्टडी एरिया, ओके. वो राइट साइड में खुला है, राइट साइड में खुला है. आपको उसका फॉन्ट कलर जो भी है ये सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको. आप वो डब्बा डाला है उसको बैकग्राउंड भी दे सकते हो. बहुत सारे ऑप्शन है. बड़ा हो गया थोड़ा, ठीक है. कलर भी चेंज कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है. अब बड़ा हो गया तो हमें पता चला कि एस नहीं है उसमें स्टडी एरिया में. रहने दो, बड़ा ही रहने दो, सबको दिखेगा. एस टाइप कर दो, एस टी यू क्या है, हाँ है, चलो ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा था. और क्या क्या ऐड करना है? स्केल.
ठीक है, आपका स्केल आ गया। क्या स्केल दे रहा है इसमें? 1:2, क्या नंबर आ रहा है पहले सेगमेंट में? 280 या 380? नहीं नहीं, यहाँ सर पे टू आप, हंड्रेड है, 200 किलोमीटर है। ओके, इतना डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, ठीक है, फाइन। बट सर दिस इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये तो जहाँ ये 200 दिखा रहा है एक्चुअली, ये तो पूरे इंडिया का उससे भी ज्यादा लग रहा है एक्सटेंट, जो इसका जो वो है। तो ये इस पे 200, आई डोंट थिंक दैट्स द करेक्ट नंबर। यू आर राइट, इट इज नॉट डायनेमिक। ये देखना पड़ेगा इसमें क्या डिफॉल्ट ऑप्शन दे रहा है स्केल में। बट ठीक है, चलो, उसको आपने काफ़ी डिस्कस किया है। वो सही बोल रहे हैं आप, इतना नहीं, 200 किलोमीटर दिखा रहा है ना? नो, इस व्हाट इज यूनिट? किलोमीटर? बार कहाँ, किलोमीटर ही है आई थिंक। किलोमीटर चलो, ही दे रहे हैं। ठीक है, चलो, बाकी और? सर और मैं आपसे पूछ रही थी ना, ये ग्रिड लाइन कैसे आता है, वो नहीं आ रहा है इस इधर। अच्छा अच्छा, आपने पूछा था, बताओ यार, ग्रिड लाइन कैसे आया? बाकी लोग? प्रिया, उसमें जाओ, ये मैप प्रॉपर्टीज में। मैप मैप प्रॉपर्टीज। वन, मैप वन है ना, मैप वन की प्रॉपर्टीज में राइट में अच्छा जो, यहाँ पे हाँ हाँ इसकी, हाँ इसके नीचे ग्रिड होगा। कहीं ऊपर हाँ ये, उसमें? हाँ, ठीक है। इसमें प्लस एक ऐड कर दो, ग्रिड वन, और मॉडिफाई। इसमें भी वही स्केल से रिलेटेड ही होगा, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। अगर वो स्केल कंपैटिबल है तो ग्रिड दिखाई देगा, नहीं तो फिर ग्रिड नहीं दिखाई नहीं, देगा। हाँ, एक को ही ये आपको किए करो रखो, सेलेक्ट। हाँ, डिलीट कर एक दो को ही, बाकी। हाँ एक को सेलेक्ट करके मॉडिफाई करो उसके, नहीं पहले सेलेक्ट करो कुछ गलत हो ग्रिड। गया यहाँ पे। नहीं, हाँ ठीक है, बैक, ठीक, अच्छा ठीक है, ठीक। करते जाओ। इंटरवल क्या लिखा है, दिखा है वो दिखा दो। अ, चलो, ऐड करो, इसमें आ रहा है, लाइन लाइन लिया, टिक लिया, क्या आ रहा है ग्रिड लाइन में? नहीं लिया यहाँ पे, टिक ले लिया? लिया लेकिन मतलब ये नहीं हुआ ना, ड्रॉ नहीं हुआ। जस्ट ये पॉइंट करके रखा है। मेरे ख्याल बैक करके रिफ्रेश भी करना होगा, जो वो एरो है ना, बैक ये वाला, मैप मैप ग्रिड प्रॉपर्टीज के साथ वाला जो एरो है, ये इधर नहीं। ये हाँ वाला। हाँ इधर इसका, हाँ इधर एक रिफ्रेश भी था एक, हाँ ये वाला, मगर हाँ अभी मॉडिफाई करना होगा। आपका? हाँ कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, आपने सेम है। क्या लिया, लाइन लिया है या पॉइंट, टिक है, क्या है? आएगा, चेंजेस तो आएगा। क्यों नहीं आ रहा है चेंजेस उसमें? I think, sir, this is also related to the scale, because when I tried to नहीं, decrease the order of magnitude of my scale of the map, हाँ, then the grid was getting displayed, because I was trying along with the scale bar and the grid simultaneously. So the grid was displayed when I was changing that order of magnitude. वो जो 17 करोड़ था, उसको मैंने जैसे 17 लाख किया तो ग्रिड डिस्प्ले हो गई थी। तो ग्रिड और मैप स्केल बार का मुझे लग रहा है कुछ वो है, रिलेशन है। और इसमें इंटरवल क्या दिखा रहा है आपका? इंटरवल देखिए क्या दिखा रहा है उसी ग्रिड में, नीचे इंटरवल क्या आ रहा है यहाँ पे? चेक हाँ, कर रही हूँ।
नहीं नहीं, ये दिख रहा है ना नीचे इंटरवल, ग्रिड का इंटरवल है ना वो। जस्ट गो बैक टू द ग्रिड, उसी में, हाँ, उसी के अंदर जाओ, ग्रिड के अंदर। जस्ट क्लिक ऑन द ग्रिड, और नीचे उसमें मॉडिफाई में जाओ, मॉडिफाई। इसमें ये जो है ना, मैप इस, यूनिट उसके नीचे इंटरवल है, इसके नीचे इंटरवल क्या दिख रहा है? जीरो तो नहीं है ना? 00, हाँ 00 है पूरा, 0.00 है। बढ़ाओ, बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा है, ओके, अब देखो आया कुछ? अब आ रहा है। ज्यादा बढ़ा दिया क्या? हाँ कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो ये लेकिन ये वाला सर, ये वाला जो पॉइंट किया हुआ है ना यहाँ पे, उससे मतलब ये कंप्लीटली मैच नहीं नहीं नहीं, कर रहा है दैट तो नो शायद। नो 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 प्रिया, दैट पॉइंट जो आपको स्क्वायर दिख रहे हैं छोटे, उसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ सर। नहीं नहीं, वो तो आपको शो कर रहे हैं कि ये फ्रेम हाईलाइटेड है, वो अच्छा। निकल जाएंगे उससे, कोई इसका ये नहीं है। थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया ग्रिड, कोई बात नहीं, थोड़ा कम कर सकते हैं। एक्स एंड वाई दोनों को भी प्रोपोर्शनेट रखो, दोनों इक्वल तो स्क्वायर दिखेंगे एग्जैक्ट। और भी कम कर सकते हैं तो कम करो। 1-1 पे आ सर गया। ये और थोड़ा ज्यादा होगा सर, कम करने से वो उसका ओवरलैप हो जाता है, उसको थोड़ा बड़ा करने से 10 या 15 करने से वो हो जाएगा सर। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे, करो करो, बढ़ा दो बढ़ा दो। So map unit means in terms of DMS, right, sir? होपफुली डिग्री मिनट सेकंड ही रहेगा, बट डिपेंड करता है कि मैप किस में, किस प्रोजेक्शन में और इसमें है। ये तो शायद ईपी उसमें है, ये 4326 में है। लेकिन ये सबका ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बिकॉज ऑफ 1 डिग्री क्या होता है, कई डिग्री मिनट सेकंड है, कई डिग्री डेसिमल होगा, यूटी मतलब जो मैप में प्रोजेक्टेड है आपका, जो मैप का यूनिट है उस यूनिट पे ये आपको देगा। चलो ग्रिड हो गया, आगे चलते हैं। टाइम देखने दो मुझे थोड़ा। सो ओके, चलो टाइम भी 6 बज चुका है। प्रिया नेक्स्ट और क्या करोगे? सर मुझे नहीं आइडिया लग रहा है कि नेक्स्ट क्या क्या करना होता है, इतना ही तो दिखाया आपने। इसमें जैसे ग्रिड लाइन आपने प्रोजेक्शन के लिए मतलब जो भी टॉपिक डिस्कस किया उसमें थोड़ा बहुत लीजन, कवर हुआ। लीजन भी ऐड कर सकते हो ना? और ओके अच्छा तो दिख रहा है मैप आपका, लीजन दे दो उसको। हालांकि सर, हमने उधर वो कहाँ लीजन से है, हाईलाइट करेंगे? वही वही उधर ही है। अभी आपने उधर, ठीक है, आप एक ही कलर सारे हैं, अलग अलग हमने डिस्प्ले नहीं किया है इसको, अच्छा लीजेंड। फिर भी लेकिन अगर आप वहां सर पे हाँ, ये लीजेंड ऐड करते वक्त मैं बाहर कर इसको कर दीजिए, रही ऐड कर दीजिए हूँ, यहाँ कुछ और ही आता है। सर ऐसे आता है ये। क्या आ रहा है? सर नहीं समझ में आ रहा है क्या, 10 पॉपुलर, हाँ वो जो पहले जो मैप का जो हमने ऐड किया ना, वहां से 10 मीटर पॉपुलेटेड प्लेस ऑन, वो चीज तो आ रहा है यहाँ पे बुलेट नहीं नहीं देखो। नहीं 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 नहीं, वो जो आ रहा है वो सही आ रहा है, बहुत छोटा है, मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये भी लिंक्ड प्रॉपर्टी है, डायनेमिक है। तो ये एक्चुअली क्या है, आपका जो अभी मैप डिस्प्ले हुआ है, इसमें सारे एक ही कलर के पॉइंट है, हाँ इसलिए आपको एक डॉट दिखा रहा है और उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है सामने उस फील्ड का। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ ब्लू, कुछ ग्रीन, कुछ रेड, कुछ अलग करते, तो उतना आपका एक्सप्लेनेशन, इसका टेक्स्ट आता। ये वाला सर, ये वाला ये शो ठीक कर है रहा है जो यहाँ आ रहा पे, है ये। हाँ, क्योंकि अभी आपने कोई डिस्प्ले किया ही नहीं है ना उसको। इसीलिए नहीं आ रहा, ठीक है सर। यस मनप्रीत, यू आर से यू कैन जस्ट ओपन द माइक्रोफोन एंड गिव योर इनपुट्स, नो सर प्रॉब्लम। एक्चुअली उन्होंने कैटेगराइज नहीं किया ना, और सिंबोलॉजी हाँ, नहीं कोई मेंशन की है, सो दैट्स व्हाई वो शो नहीं हो रहा है लेजेंड यस में। यस, वही मैं भी उनको बता रहा हूँ कि अभी एक ही कलर है, इसलिए एक जी लाइन में लीजेंड आ रहा है उनका। जी जी जी। हम्म, चलिए लीजेंड हो गया, और क्या कर सकते हैं? नॉर्थ। नॉर्थ यहाँ पे देख के रखी हूँ मैंने।
आपका दिख नहीं रहा है। नॉर्थ एरो सर जो है यहाँ पे ना, ग्रिड आ गया ना, इसलिए नहीं दिख रहा, इसको मैं बाहर नहीं बाहर नहीं आप निकाल वही, लेती हूँ। नहीं नहीं आप वही रखो उसको और उसको दिखाओ। मनप्रीत ने बोला क्योंकि उनको दिखा नहीं, तो आप अभी इसको थोड़ा आर्टिस्टिकली दिखाओ कि वही उसके अंदर भी आप दिखा सकते हो। दिखाओ। कलर करके। सर इसकी हाँ प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं हम। बस, हाँ बॉक्स, उसको बॉक्स डाल दो, सॉलिड बॉक्स, तो दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम। या कलर भी सीधा दे दो, कोई टेंशन नहीं है। सर नॉर्थ एरो डायरेक्शन हमेशा मैप के अंदर रहती है। कलर चेंज करना है आपको, कलर बॉक्स का, बॉक्स बैकग्राउंड में जाइए ना, सीधा बॉक्स का बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए। नीचे होगा कहीं बैकग्राउंड दिखेगा, एक टैब होता है बैकग्राउंड, और नीचे होगा कहीं, दिख रहा है आपको बैकग्राउंड? आपका नॉर्थ एरो इसलिए, हाँ यहाँ पे आइए, कहीं बैकग्राउंड होगा देखिए, नहीं मिल रहे? हाँ नीचे नीचे आ गया, हाँ। तो आप दे दो, कलर सिलेक्ट करो। सर ये ऐसे आ रहा है। हाँ ये आपने स्ट्रिप ले लिया ना, ये सिंगल कलर भी आएंगे इसमें। आप वो जो बैक, वो आप ठीक है, इसको भी कर सकते हो। दिख रहा है कलर चेंज हुआ? हुआ नहीं हुआ बैकग्राउंड हाँ का? सर हुआ। हाँ वो दिखेगा। तो उसमें और क्या कर सकते हैं? सर इंडेक्स बनाने होते हैं ना, जैसे हम लोग इंडेक्स बनाते हैं, तो ये शायद लीजेंड में आ रहा है, क्योंकि मैंने कैटेगराइज नहीं किया हुआ है, इसलिए हाँ। ये सिंगल शो कर रहा है। हम्म। सर ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड शो करता है वो 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 जो है ना, आपने ग्रिड जहाँ के से ये अकॉर्डिंग। डाला, डाला है ना ये, हम्म। तो उसी का, उसमें टेक्स्ट का भी ऑप्शन है, तो उसको चेक इन करोगे तो आ जाएगा। लेकिन अभी इसका इंटरवल और आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी वो दिखेंगे, नहीं तो सारे लेबर एक के ऊपर एक आएंगे। ठीक है, उसको करिए। और क्या कर सकते हैं? यस मनप्रीत। सर ये ग्रिड जो इन्होंने लगाई है उसको कैसे और भी तो चेंजेस हो सकते हैं इसमें, जैसे ये पूरा ही वो दिख रहा है लाइन। क्या नहीं समझ में आया, आपकी थोड़ी आवाज इको हुआ थोड़ा। क्या चेंज बोल रहे मनप्रीत? सर वो ग्रिड चेंज करने के लिए शायद बोल रही हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये ग्रिड चेंज करने के लिए ये जो एक छोटा पूरा छोटा है ना, ये थोड़ा बड़ा बाउंड्री। कर। हाँ जी, अच्छा आउटर साइड में हम बाउंड्री बढ़ा लगाते दो, हैं ना एक। बढ़ा दो, इंटरवल बढ़ा दो। मे भी 2 से 3 ही ग्रिड रखे तो ज्यादा बेटर है। सर इसको चेंज करने से कोई चेंजेस आएगा इसमें? नहीं नहीं, जहां से आपने अभी इंटरवल था ना, ग्रिड का इंटरवल, ग्रिड इंटरवल था ना, जहां से आपने ग्रिड को मॉडिफाई किया, फिर से हाँ मॉडिफाई करिए। ग्रिड को जो मॉडिफाई आपने किया था ना, लैटिट्यूड, ये मॉडिफाई वाला ही है क्या? नहीं नहीं, मैप वन में जाइए आप। ग्रिड स्पेसिंग, ग्रिड के बीच में स्पेस कितना जाएगा ये ग्रिड स्पेसिंग। प्रॉपर्टीज में जाना होगा। सर मैप पोजीशन कम करेंगे ग्रिड के ऊपर। ग्रिड आ गया, हाँ। उसको सिलेक्ट करिए और मॉडिफाई करिए, उसी पे क्लिक करके जस्ट, हाँ, और देन यू मॉडिफाई। अब यहाँ पे आप चेंज कर दो। सर इसको कम करना है या बढ़ाना है? बढ़ाना है।
सर और बढ़ाऊं? नहीं, अभी देखो ना कितना आ रहा है, नहीं तो पूरा एक ही ग्रेड आएगा, नहीं तो पूरा बाहर जाएगा उसमें से। चेक कर लो एक बार, रिफ्रेश कर दो। अभी ठीक है सर, या फिर इससे भी बड़ा? आइडियली और भी बड़ा करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, लेकिन वो हो जाएगा। चलिए, अब मैं सोच रहा हूँ कि और कुछ ऐड करना चाहते हैं आप लोग इसमें, सोर्स बाकी स्टूडेंट और सोर्स कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ सर, सोर्स। अब सोर्स में आप क्या ऐड करना चाहते हो? कुछ वेब लिंक देना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? तो वो भी कैसे करोगे? आपको टेक्स्ट बॉक्स डाल के करना है, मतलब सोर्स क्या देना है उस पर डिपेंड करता है। इफ इट इज से ये कौन सा था, नेचुरल अर्थ का अगर लेना है तो आपका उसका वेबसाइट लेके आएंगे, सोर्स लिखेंगे और उसके और यहाँ सामने कॉपी मैं, पेस्ट। हाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये कौन है? विनायक जी। सर हम ग्रिड टाइप मतलब कौन से बेसिस में सिलेक्ट करेंगे? क्या क्या? ग्रिड टाइप को मतलब यहाँ पे जो सॉलिड दिया है वो मतलब हाँ, तो हर वो रिक्वायरमेंट आपको क्या अच्छा लगता है? आपको पूरा ग्रेड देना है या सिर्फ टिक देने हैं, उस टाइप के? और उसमें भी फिर ऑप्शन होते हैं, डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर अगेन। लाइक कुछ ये होता है कि आपको सिर्फ बॉर्डर में टिक्स चाहिए, इनसाइड टिक चाहिए। वो सारे ऑप्शन आपको प्रॉपर्टीज में से मैनेज करना है, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके सर, थैंक यू। या सर मैं बोल रही थी कि ये आपने जैसे बोला ना कि ये आपका मैप परफेक्ट हुआ है या ठीक ठाक हुआ, ये मुझे कैसे समझ में आएगा? ये तो मतलब आपने कराया तो मैं इसको कर ली, मैं खुद से भी इसको कर लूंगी, लेकिन ये जो मतलब होता है ना रेक्टिफाई करना मिस्टेक, वो कैसे समझ में आएगा? नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें। आप जीआईएस सॉफ्टवेयर में आप चाहे तभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते हो। इट विल नॉट अलाउ यू टू डू एनी मिस्टेक। मिस्टेक, क्योंकि ये सारे डायनामिक है। आपने सोचा कि मैं कुछ इधर चेंज करूंगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप मिस्टेक कहाँ कर सकते हो? टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है मिस्टेक का। दूसरा, मिस्टेक तो उसको नहीं बोल सकते हैं। दूसरा, लुक एंड फील, कि भाई पॉलीगॉन, लाइन की थिकनेस, पॉलीगॉन के कलर, लीजेंड कहाँ रखना है, नीचे रखना है, साइड में रखना है, ये सब लुक एंड फील वाली चीजें हैं। तो ये इसको गलत नहीं बोला सकता है, बोला जा सकता है। प्रेजेंटेशन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है उसको, प्रेजेंटेशन मतलब। इधर उधर हो सकता है, इसमें आप गलत कुछ कर ही नहीं सकते। दिस सॉफ्टवेयर विल नॉट अलाउ यू टू डू एनीथिंग। आपने ग्रिड इंटरवल अभी कर रहे हो ना, आपने मान लीजिए कि 5 5 का सिलेक्ट किया, वो बाय डिफॉल्ट वो 5 5 ही जाएगा। वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दिस। ओके सर। सर फिर आपका भी मतलब है प्रोजेक्ट का वो पैरामीटर्स? हाँ, it will take, because most of the things are dynamic here. You cannot do anything. In fact, you will not able to touch anything to edit any polygon or any feature here. वो पॉसिबल ही नहीं है। वो उधर तो डाटाबेस में तो एरर होना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी है जस्ट टाइपोग्राफिकल एरर्स एंड मे बी लुक एंड फील टाइप ऑफ द थिंग। तो एरर इसमें नहीं होगा। Topography will be basically topology will be preserved. Every, because see, I just forgot to tell you, here you are not playing anything with the database. Neither it will allow to play you, ऑप्शन ही भी नहीं मिलेगा। और ऑप्शन मिल भी जाएगा, फॉर एग्जाम्पल डायनेमिक इसमें है, तो इट विल चेंज इन योर डाटा आल्सो। उधर जो आपका जीआईएस डाटाबेस होगा जिसको आपने यहाँ पे क्या ये हो, ये उधर भी चेंज करेगा। इसलिए वो ऑप्शन नहीं है कि एरर हो जाएगा, या मैंने मान लीजिए पैन लिया और मैप इधर से उधर किया तो कुछ चेंज होगा। नो, कुछ नहीं होगा। सो आई थिंक प्रिया, आई लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट्स यू। You were struggling since morning to learn the things.
So I let me tell you this GIS module: database creation, editing, map composition. So most of the courses is GIS course. It is 6 month program, 1 semester program, where weekly you will be having say 2 practicals or 3 practicals sometime. It's a big module actually. So I have taken this module many time. I know the difficulty, how much time it is taking. But installing QGIS software in the morning and doing exercise on map composition in second half, that is your great achievement, Priya. You and I forgot one more student, 2 or 3 students were there. So the installing software in the same day and again doing map composition, even this is first experience for me also. I had many batches, but no student has done this starting from the scratch, installing software and doing this. So I'm very happy Sir, whatever you actually, learn in days sir, time. हाँ, Yes. ये मेरे लिए भी थोड़ा-सा मतलब ऐसे शर्म शर्म लग रही थी मुझे पूछने में कि मैं ही बार-बार पूछ रही हूँ और कोई No, नहीं पूछ रहा है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, कोई nice. मेरा फेस तो नहीं देख रहा है, मैं पूछ ही लेती हूँ। मैं फेस भी देखेगा तभी पूछूं, लेकिन नॉलेज के लिए शर्म करने की, ये लाइफ में हमेशा याद रखना है। आप किसी भी फोरम में जहाँ भी ये हो। सब यहाँ सब कर पा रहे हैं ना, जैसे अभिमन्यु है, फिर से जो मुझे हम्म। हेल्प कर रहे थे, उम, उनका नाम मुझे बार-बार मैं भूल जा रही हूँ। वो मुझे सुबह में भी हेल्प किए थे एक बार। मतलब बहुत लोग यहाँ पे 2-3 आदमी ऐसे हैं कि जो बहुत एक्टिव हैं। हम्म। मनप्रीत हैं, तो मैं मुझे लग रहा है कि मैं ही क्या फेलियर हूँ, मुझे ही नहीं आ रहा है, बाकी सब तो आराम से कर रहे हैं। थोड़ा-सा मुझे नहीं नहीं एम्बैरेसिंग लग रहा था, लेकिन अभी आपने बोला तो ठीक है, मुझे करेजेस मिलेगी, मैं करूँगी खुद से। नहीं, लेकिन लर्निंग के लिए कभी भी हमें मतलब शर्म नहीं लगनी चाहिए, कोई फील नहीं होना चाहिए। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कोई भी बंदा नहीं हु इज ऑल राउंडर और परफेक्ट विथ एवरीथिंग। ऐसा कोई भी नहीं है, हम लोग भी सब सीखते हैं। जिस स्टेज में, जिस बोट में आज आप बैठे थे, उस बेट में हर कोई बैठता है। मैं भी किसी दिन बैठा था, मुझे भी नहीं पता था अरे ये फाइल कहाँ से आता है, कैसे ऐड करना है वो भी नहीं पता होता है, कैसे क्रिएट करना है। तो ये हर किसी के साथ होता है। बट यू पिकड अप वेरी क्विकली बिकॉज ऑफ योर eager of learning, and I am very happy. Even this is history in my professional career also. In a single day, someone has installed the software and doing the exercise on it. I'm very happy with this. Sir, it's all because of you and our colleagues, those who have Yeah, helped I me. think. Sukanta especially, Yeah, she helped me from the beginning to from installing to letting me know how to add vector and all. Thank you everyone. Manpreet, So you I are have saying you raised your hand in between. Yeah. एक्चुअली सर मैं इन्हीं की बात पे कुछ कहना चाहती थी कि इन्होंने अगर ये कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमें भी बहुत क्लैरिफिकेशन होती है। अगर हमारा कुछ मिस हो जाता है बीच में तो हमें बहुत Hmm. हेल्प होती है कि जो कुछ बीच में मिस हो गया तो वो कवर अप हो जाता है। सो ऐसा Yes. नहीं सोचना है इन्होंने। यस एग्जैक्टली, एंड पर्पस भी वही है। जो क्योंकि मैंने पहले बोला था कि मैप कंपोजिशन 10 मिनट्स का काम है, ठीक है। और ये मुझे अभी भी पता है, अगर आप फिर से अभी करोगे तो शायद 10 मिनट से पहले मुझे बोलोगे 7 मिनट में हो गया मेरा। ये पता है मुझे अभी, लेकिन इसको करना बहुत ज़रूरी है। और डेमो जो स्टूडेंट से करते हैं, अभी जैसे प्रिया ने डेमो किया, मुझे पता है कि वो तो सवेरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, वो बहुत उसको स्ट्रगल फील होगा। फिर भी करेंगे तो उसमें से भी कुछ ऑप्शंस होंगे डेफिनेटली जो मिस हो गए हो, या आपने ट्राई किया वो उस वे में नहीं आए, तो इसलिए वो डेमो हेल्प करता है। चलिए, गुड। आई थिंक टुडेज session was very slow. Uh, Actually, I was thinking to cover few more things, but it could not happen because of some reasons. But anyway, good thing is that we all
all did properly, and we will close this with some confidence so that tomorrow, if you want to repeat this, you can do it very easily. Any suggestion, question, if there, please raise. Otherwise, we are good to close. It's around 6:30. I don't want you to hang up long. So, if no question, suggestion, then I think we can stop here. And tomorrow, Yes, सर सर वो वाला थोड़ा रह गया सर, वो कल होगा तो उसको थोड़ा कवर कर दीजिएगा सर। टोपोसिट का ना, हाँ सर, कल या किसी भी दिन अगर होगा ठीक तो है, सर। ठीक है, I'll explain that. I'll explain that. Actually, sir, this is the basic thing, sir. What we need to know, sir. हम्म, ठीक है, Understanding a opposite is very important, sir. yes. Okay, I think let us close. Okay, Manpreet. Yes, sir. Thank you, Okay, sir. guys, thank you very much, and see you tomorrow morning. Thank you so Thank much, you sir. very much, Thanks a sir. lot. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Bye, everyone. Thank you, sir.